Welcome back to CM Journal. Do you know बिजनेस आपको भगवान बनने का एक चांस देता है? पता है कैसे? चलो अभी बताता हूं। चलिए तो शुरू करते हैं। भगवान का मीनिंग मतलब आई नो भगवान की मीनिंग बहुत अलग अलग है। फॉर एवरीवन इट इज अ डिफरेंट। लेट्स टॉक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड भगवान ओवर हियर इज जस्ट अ मेटाफर. इट्स नॉट रियली यू विल बिकम अ गॉड, बट आई विल टेल यू हाउ इट इज रिलेटेड टू अ बिकमिंग अ गॉड. सो आज का टॉपिक है ब्रांड आर्किटेक्चर. और ब्रांड आर्किटेक्चर इज वेरी 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 क्रूशल टॉपिक जो आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे ब्रांड मैनेजर्स भूल गए हैं. मैं आपको ब्रांड आर्किटेक्चर से 4 पॉइंट्स में समझाऊंगा. इट विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो, सो यू विल नॉट गेट बोर्ड. So first, we will talk about the brand architecture. What do you mean by brand architecture? Okay. So I know फिलिप कोटलर और बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स में ब्रांड आर्किटेक्चर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है. But this channel, I always tell you the truth or to the definitions like a layman language. Okay. So brand architecture is nothing but अगर आप भगवान हो, जस्ट फर्ज करो कि लेट्स से यू आर अ गॉड एंड यू हैव टू प्रोड्यूस ए ह्यूमन बीइंग. ओके. सो अगर ह्यूमन बीइंग बनाना है तो उसमें जो भी सारे एस्पेक्ट्स आते हैं वही आपके ब्रांड आर्किटेक्चर में आता है. सो ब्रांड आर्किटेक्चर इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ योर ब्रांड, द फाउंडेशन ऑफ योर एवरीथिंग एक्चुअली. सो अगर आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा है तो बुर्ज खलीफा के उतना ही नीचे फाउंडेशन इज द की, राइट. फाउंडेशन बनाने के लिए उनको बहुत टाइम लगा था. सो सिमिलरली businessmen have to deploy a lot of time on defining the brand architecture and locking it. Most of the people doesn't do that. So let's understand what is brand architecture. Brand architecture के basically जो है वो 4 points है. So I'm just telling you in a very short what are the 4 points and how I will. So मैं 4 points समझाते आपको बताते जाता हूँ कि ये 4 points कैसे ब्रांड आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं. So first point है brand personality. So brand personality is nothing but it's your logo of the brand. Okay. So आप एक जस्ट एक फर्ज करो कि जैसे मैं चेतन हूँ, आप कोई और है, XYZ ABC PQR एक्सेट्रा. हर आदमी, I mean over here, her human being is different from everyone, right? So every human being have some strength and some weaknesses. And obviously, when we are developing anything, we want to give all the strengths for that human being. So let's say you are a brand, you're creating a brand. So first is your logo. That means how you will look, right? First personality, first appearance, first जो हम बोलते हैं कि आपको देखते समय मुझे क्या पता लगता है, तो दैट इज योर लुक, राइट. बाकी सब बाद में आता है, योर लैंग्वेज, योर टोन, हाउ योर बिहेवियर, योर इमोशनल क्वेश्चन, बाकी सब बाद में आता है. फर्स्ट आता है वो है कि हाउ डू यू लुक. सो सिमिलरली ब्रांड आर्किटेक्चर में ब्रांड पर्सनालिटी डिफाइंस दैट ओनली. सो फर्स्ट इज लोगो. लोगो बहुत सारे प्रकार के होते हैं एंड लोगो बनाते समय बहुत सोच समझ के विचार करके ही लोगो बनाना चाहिए. In my opinion, if you create a logo, let's say in a one day, or your designer or your agency is creating a logo in a day one, okay, give some thought, give some time. Because what is the problem is when you see it at the first look, you will feel it, wow, what a nice logo, right? एजेंसी होगी या फिर आपका डिजाइनर होगा, सब खुद होंगे. आप वो लोगों को एक मीनिंग देने की कोशिश करते हो और वो मीनिंग दे देते आप एक सपनों में चले जाते हो. एंड वंस यू आर गोइंग टू द ड्रीम, actually you feel that your logo is world class, right? Don't do that. Stay for some time, look at the logo, घंटों घंटों उसके पास देखते रहो. Just watch the logo, give some time. Okay, I would say just at least 2 to 3 days to before finalizing a logo. Okay, so आप लोगों की तरफ देखो देखो देखो, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि लोगों में क्या प्रॉब्लम्स है. एंड once you wake up in the next day morning, you will only feel that okay, अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा, इसमें ये ऐड करूंगा, उसमें ये कलर डालूंगा, उसमें ये फॉन्ट चेंज करूंगा तो लोगो और अच्छा दिखेगा, राइट. सो हम ये सबके साथ होता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. सो गिव द टाइम. सो जो 2 या 3 दिन के बाद लोगो जो नजर आएगा ना, वो एक्चुअली आपके फर्स्ट कट से बहुत अलग रहेगा. एंड बिलीव मी, दैट शुड बी योर फाइनल लोगो. सो
first point in the brand personality is the logo. Second is color. Colors are always primary and secondary. Lot of people, well, a lot of agencies usually what they do is tell to their client that अच्छा okay आपके कलर्स तो सिर्फ दो या तीन ही होने चाहिए. Yeah, they are partially right. When you say primary colors, it should be two, max three. थ्री भी नहीं, दो होने चाहिए. ओके, वो कलर आपके लोगों के कलर होते हैं, वो कलर आपके लोगों के एट्रीब्यूट्स के कलर होते हैं, एक्सेट्रा. एंड देर आर ऑलवेज अ सेकेंडरी कलर. हमेशा ये गलती कभी मत करना कि आप दो या एक या दो कलर में ही लॉक हो जाए, राइट. अगर आप उसी में लॉक हो गए ना, तो आपकी प्रोडक्ट लाइन सब कुछ एवरीथिंग will look so monotonous. It will not look good. That's why you should always have a secondary colors. Secondary colors में बहुत सारे palettes भी आप रख सकते हैं. So for example, let's say you are keeping a 4 to 5 palettes. So palette, when I say palette means क्या कि अगर आप red रख रहे हैं तो रेड के सारे ऊपर नीचे 5-6 पैलेट जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी कलर होगा एक सेट. ओके, वैसे आप 4 या 5 सेट बना सकते हो. व्हाई इट इज नेसेसरी? बिकॉज whenever you are developing a product, if you are a service or if you are a manufacturer, doesn't matter, but when you are developing a product, these products should have these colors only. That's why you keep it a range. मतलब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार कौन से प्रोडक्ट डार्क ग्रीन विल लुक गुड, समटाइम इट विल से अरे नहीं इसमें थोड़ा सा लाइट जाता है. It usually happens when you are developing anything on the digital. Okay, so for example, a yellow color product will look good in the real scenario, but yellow color website may not look good, right? So that's why you should keep a secondary colors. And remember, these colors, these logo should be coherent with your every brand touch points. Okay, you should use these things only when you are developing anything under that particular brand. I will come to it that in a bit. दूसरा है ब्रांड एट्रीब्यूट्स. ब्रांड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, जैसे आइकन हो गया, निमोनिक हो गया, टैगलाइन हो गया, ये सब ब्रांड के एट्रीब्यूट्स है. आपको सबको पता होगा एयर इंडिया का महाराजा, दैट्स इट. So that is a one of the brand attribute which was carried from the Indian Airlines, I think so. And the another good example is Nike. Nike का आप टिक मार्क देखो, you will come to know that okay, this is Nike और Reebok और Adidas, Apple, etc. वो आइकन देख के आपको पता चल जाता है कि what kind of a brand I'm looking at. Correct? So that's why attributes is also very necessary. The second major point is voice and tone. How your brand is actually talking to the people. This is a good example. Let's say if you are going into a very shabby hotel to stay, okay, like a lodge or something like that, वहां पर आप जाते हो तो वहां के जो स्टाफ है, वहां के जो रिसेप्शन है, वहां के जो मतलब नो आपको जो खाना परोसने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से आपसे बात करते हैं. एंड सिमिलरली व्हेन यू गो into a brand like Novotel, Tata, Taj and etc. So वहाँ के लोग एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, राइट. ऐसा है क्या कि ये लोग अलग अलग है? नहीं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बार एक ही लोकेलिटी में रहने वाले ये दो लोग हैं, बट ये जब उस ऑफिस में आते हैं तब वो अपने ब्रांड की लैंग्वेज बोलते हैं. सो द ब्रांड लैंग्वेज, द ब्रांड वॉइस एंड टोन इज वेरी नेसेसरी. सो दिस वॉइस एंड टोन शुड फ्लो in your all the literature whatever you are developing. For example, if you are developing a website, you should have a same tone. If you are developing a normal offline something, if you are developing anything for the event which is going on offline, still the tonality should be same. That's why the brand become brand, right? इसका simple example, आप अगर Starbucks में जाओगे तो they have a certain pattern to call your name, right? You must have noticed it. And it is same across the world. Yes, it is same across the world. Why? Because it is their brand essence, it is their brand tone. That's what they want to emphasize, and that's what they are famous for, right? So आप किसी भी स्टारबक्स में जाओगे आपको पता है अच्छा ये वाला टोन आया तो ये स्टारबक्स का है, अभी ये फेमस हो गया है, राइट. सो ये टोन जो भी नया ज्वाइन होता है ना उसको सिखाया जाता है, उसको बोला जाता है कि आपको इसी प्रकार किसी को भी बुलाना है. इट इज नॉट लाइक दैट somebody has just started it like randomly. No, it is basically they have achieved it over the years that okay, this is the brand tone which we want to carry.
smell of the brand also it is very necessary, right? If you go to any Starbucks in India, any Starbucks in US, Dubai, wherever you go, right, the Starbucks smell is that authentic coffee smell is similar everywhere, almost everywhere, right? 19-20 का फर्क होगा, but majorly वो same होता है. So this actually defines brand. ये छोटी छोटी चीजें होती है, बट यही एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्पैक्ट कर जाती है. So whenever you're developing the brand architecture, understand that you need to first focus on the subconscious mind, not on the conscious mind, right? जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है ना, वो छप जाती है, वो कभी जाती नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाना ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप कभी भूलोगे नहीं, राइट? इवन इफ यू टच द साइकिल आफ्टर 10 years, स्टिल यू कैन बैलेंस इट. स्विमिंग, स्विमिंग जो एक बार सीख लिया वो सीख लिया, उसको आप 10 साल के बाद भी पानी में डालो, ही कैन स्विम. हाँ, उसको स्टैमिना और ये सब बात अलग है, बट एटलीस्ट ही कैन स्विम, राइट? सो वो स्विमिंग की जो टेक्निक है वो कभी नहीं भूलता. So that is the voice, tone, and etc. What we are talking about. The third major point is target group. Define your target group very, very, very well. मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका एक ब्रांड हो, उसके अंडर सब ब्रांड्स हो, okay, and every sub brands might have a different target group. That's okay, but every sub brand should have a defined target group. Why I'm telling you, people do a mistake that they produce a product which looks premium, they keep a pricing very premium, they want to sell it on a place which is not so premium, right? And then they are saying, oh no, the product is fail. No, the product is not fail, your strategy is fail, you're not defining the TG very well. और बहुत बार ना इंडिया में बहुत का, नहीं नहीं मेरे तो ये भी बेचना, मेरे तो ये भी बेचना, मेरे तो ये भी बेचना, मेरे को इसको भी बेचना है, मेरे को उसको भी बेचना है, मेरे नो नथिंग. ऐसा नहीं हो सकता. यू शुड ऑलवेज डिफाइन योर टारगेट ग्रुप. यस, आई अंडरस्टैंड दैट 5 to 10% स्पिलेज हमेशा होता है. ऐसा होता है कि अच्छा ये टारगेट ग्रुप तुमने सोचा ही नहीं था, बट ये भी बाय कर रहा है शायद से, उसमें से 2-4 लोग बाय कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ मेजर स्टेक, राइट? यू हैव टू फोकस ऑन द ग्रुप विच कैन बाय योर प्रोडक्ट 95% टाइम, राइट? सो तभी आपका टारगेट ग्रुप डिफाइन होगा. वंस यू डिफाइन द टारगेट ग्रुप, you will actually know that how to position the brand, what color needs you need to choose, what kind of a brand tonality should be there, etc. That's why target group is very, very, very important when you develop your brand architecture. और brand architecture जैसे मैंने कहा कि you might have a sub brands, so that for that sub brands you will have a different target group. So obviously for the sub brands everything will be different, right? Brand personality is different, your voice and tone is different, your target group is different. So ये सब कुछ कोवरेंस में चलता है, ये सब कुछ एक साथ चलता है, तब जाके एक ब्रांड के सब ब्रांड का आपका ब्रांड आर्किटेक्चर रेडी होता है. सही है? सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू एनी मारुति शोरूम, Nexa is completely different, right? And the Maruti normal showroom is completely different. You will feel the difference once you enter. Forget about the cars, the ambient, the kind of people are there, the kind of service they provide, etc. बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिंपली डिफाइन कर. सो दीज टू ब्रांड्स आर सेम फ्रॉम द सेम ग्रुप, राइट? मारुति सुजुकी, बट स्टिल दे आर, मतलब ना बहुत डिफरेंट है. मतलब आपको लगेगा कि अच्छा ये नेक्सा मतलब किसी और कंपनी का भी ब्रांड हो सकता है. इस तरीके से आप सोच सकते हो, इतना वेरी वेल डिफाइंड है. दैट्स व्हाट इट इज सब ब्रांड्स आर्किटेक्चर. ओके, देन इट कम्स द इमोशनल अपील. सो अगर आपने एक इंसान बना लिया, ओके, ये ब्रांड बना रहे हो, इंसान ही बना रहे हो, राइट? ये अगर आपने इंसान बना लिया, तो इंसान का सबसे क्रूशियल चीज क्या है? बिहेवियर. सो हम लोग रतन टाटा जी, MS धोनी, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, राइट? रतन टाटा जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इज अ गुड entrepreneur or a good human being. We say, always say he's a good human being because of his behavior, right? How polite he is, how caring he is, something like. So similarly, your brand should also have some emotional appeal. Brand will always have an emotional quotient. How he is he caring, is he bold, he is confident, he is little masculine, he is little feminine, etc. और इस सब में आपको जो ब्रांड अच्छा लग रहा है, आपको जो दिमाग में है, आपका प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से ये इमोशनल अपील डिसाइडेड होती है. ऐसा कुछ नहीं कि इसमें से ये अच्छा है और ये बुरा है, ये बुरा है और ये अच्छा है. नथिंग लाइक दैट. There is no right and wrong answers in the brand developing a brand architecture, right? So everything is defined very well into the emotional appeal in terms of behavior,
in terms of emotional quotient, and in terms of brand culture. So these all things actually develop a brand culture in that person, right? So आज रतन टाटा जी की जो भी इमोशनल क्वोशेंट है, उसके वजह से टाटा ग्रुप एक अलग इमोशनल लेवल पे है, राइट? टाटा जो भी मतलब आज इंडिया के लिए जो भी कर रहा है, जो भी सर्विसेज देता है, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउएवर एनजीओज, सो मेनी एनजीओज आर देयर, सो टाटा एक केयरिंग, ट्रस्टेड, रिस्पॉन्सिबल ब्रांड की तरह हम लोग देखते हैं, राइट? क्यों? बिकॉज ऑफ हिज इमोशनल अपील, not because of his logo is green or red or blue or black, right? But what is his emotional appeal? So that is a fourth very, very, very important point. So remember, whenever you are developing anything, please, first step is define your brand architecture. Once you define your brand architecture, then you should go for the another digital programs, like we're developing a website, listing on the Amazon, developing a product, packaging, positioning, etc., etc. That will come in the next videos. But as of now, remember, you are the god of your brand. This is how you can become the god of your brand, because you are developing a brand which is similar to developing a human being, which can be only possible by the god, right? So God is giving you opportunity to become a God or try out, be in his little bit of character. That's what it is, brand developing a brand architecture. So all my friends, remember, always develop brand architecture in first pace. Otherwise, don't go for the next step. Okay. Thank you very much.